فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم आज इंशाअल्लाह कुछ अहम मसाइल और कुछ अवामी गलत फहमियों की इस्लाह के सिलसिले में बयान किया जाएगा। आज इंशाअल्लाह कुछ सिलसिला करेंगे और उसके बाद बकिया हिस्सा बाद में इंशाअल्लाह किया जाएगा। जो ख़ास मसाइल में हम गलत समझते हैं या गलत हमारी सोच है, उस सोच की इस्लाह करने की इंशाअल्लाह यहाँ पे कोशिश की जाएगी, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ को समझने और हक़ पर अमल करने और हक़ का साथ देने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। एक अहम मसला है ईमान व अक़ीदे से ज़्यादा अमल को अहमियत देना। हमारे काफ़ी अवाम भाई किसी की ज़ाहिरदारी नेकी और कोई अच्छा काम देखकर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और उससे मुतासिर हो जाते हैं, जबकि इस्लामी नुक़्ते नज़र से कोई नेकी उस वक्त तक कार आमद नहीं, उस वक्त तक उसका समरा और फ़ायदा नहीं पहुँच सकता जब तक कि उसका ईमान व अक़ीदा दुरुस्त न हो। यानी अक्सर देखा गया कि अवाम द पब्लिक they give the imams and the ulama an earache. Look at them, look at them, look at them. Their mosques are filled, they do this, they do that, they do X, Y, and Z. Okay? What we need to understand is this. There's actually a hadith, this is one of the signs. That you will deem your namaz as in, you will regard your namaz as less superior than this, because of the amount of people that go and pray namaz in those mosques and so forth. But what we need to understand is, the main principle that we need to understand is, good deeds are secondary. The primary thing that we need to look at is the aqidah. Okay? If a person's got a sound aqidah, inshallah, whatever amal he does for the sake of Allah will be accepted. If his aqidah is not sound, if his beliefs and his creed is not sound, then he can do mountains, he can collect mountains of good deeds, but at the end of Yawm al-Qiyamah, Allah will make it like فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنْبَثًّا أَوْ مَنْثُورًا, like particles of dust flowing in the air, flying in the air. Nothing basically. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो पहले नमाज और ज़कात, रोज़ा, हज, अहकाम, आमाल का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि ये फरमाया था कि अल्लाह को एक मानो, बुतों की पूजा परस्तिश से बाज आ जाओ और मुझको अल्लाह ताला का रसूल मानो. The first thing that the Prophet ﷺ instructed the Ummah to do, he invited them to believe in him, to believe in monotheism, to believe in his prophethood, to abandon idolatry worship. The first thing which the Prophet ﷺ invited them towards is to refine, is to purify their aqidah, purify their heart. आज भी जब किसी काफिर को मुसलमान करते हैं तो सबसे पहले उसको नमाज, रोज़े अदा करने, अच्छाइयाँ करने और बुराइयाँ छोड़ने का हुक्म नहीं दिया जाता है, बल्कि सबसे पहले कलमा पढ़ाकर
मुसलमान किया जाता है, फिर बाद में अच्छाई, बुराई और हकाम इस्लाम से उसको आगाह किया जाता है. Simple ruling. When someone wants to revert to Islam, you don't give him a long list of things that he needs to do or she needs to do. You need to pray 5 times a day, you need to recite the Quran, 1 juz of the Quran every single day, you need to read the Arabic alphabet, you need to do this, you need to do that, you need to give zakah, Sawm, Hajj. You don't do that. It's not the way, it's a gradual process. For a revert who reverts back to the natural state, which is Islam, the first thing you give them is purify their heart with the kalima, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. I believe in Allah as one, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala as the only one, the only deity worthy of worship, and I believe as Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the final messenger. I believe Isa alayhi salam as the servant of Allah and his messenger, and I believe in all the messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala and his books and the angels and Yawm al-Qiyamah and Yawm al-Ba'ath and Taqdeer and so forth. This is Aqidah. So the first thing that you need to remember is what? Aqidah. The more sound your Aqidah is, the greater hope that Allah subhanahu wa ta'ala will accept your a'mal. Okay? So refine our Aqidah. Hadith Sharif में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, हदीस शरीफ सुने कि अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर, उहुद पहाड़ जो मदीना शरीफ के सिमत में है, मदीना शरीफ के बाहर वाले हिस्से में है, उहुद पहाड़, हादा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बु, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है. Mount Uhud. The Prophet ﷺ said regards it that this is a mountain that loves us and we love this mountain. Subhanallah. अगर कोई इतना बराबर उहुद के पहाड़ बराबर भी सोना, गोल्ड राह खुदा में खर्च करे, खुदा ताला कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि वो तकदीर पर ईमान न लाए. अगर वो शख्स तकदीर यानी faith and destiny, यानी जो कुछ हम करने वाले थे वो लिखा जा चुका है. इसके अंदर बड़ी तफसील है, लेकिन उलमा ने मना फरमाया कि अवाम लोगों को खास तौर पर तकदीर के मसाइल में उलझना जायज़ नहीं, क्योंकि हो सकता है आप तकदीर के मसाइल में उलझेंगे और फिर आपके जहन में नफसानी वसवसे आएंगे, खतरात आएंगे, आपके दिलों में एतराज़ पैदा होंगे, जिसकी वजह से नऊज़ुबिल्लाह कोई शख्स तकदीर से इनकारी कर बैठेगा. जो शख्स तकदीर में नहीं मानता है वो काफिर है. तकदीर यानी everything has been preordained, predestined. You make your destiny, yes. Whatever you were going to do, Allah subhanahu wa ta'ala through His eternal knowledge has already written it down. Shaqiyyun am sa'id, it has already been written down. So the Prophet ﷺ said, if anyone does not believe in this article of faith, which is known as fate and destiny, Al-Qadiri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Good and evil of it, it's all been written from Allah. If he does not believe in this aspect of Aqidah, then even if he spends Uhud's equivalent of gold in Allah's path, Allah subhanahu wa ta'ala will not even accept a pence from it, an ounce of it. Let alone then blasphemy, let alone then blasphemous comments in relation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, let alone then supporting those who have written derogatory remarks in relation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Ahlul Bayt and the Sahaba. इस हदीस शरीफ से खूब वाज़ेह हो गया कि जो इस्लाम के लिए ज़रूरी अक़ाइद न रखता हो उसकी कोई नेकी नहीं. कुरान करीम में भी फरमान खुदाबंदी है. ये कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज अदा करते और हमारे दिए हुए माल में से हमारी राह में खर्च करते हैं. इस आयत करीमा में अभी अल्लाह ताला ने नमाज और राह खुदा में खर्च करने से पहले ईमान का जिक्र फरमाया. यानी कुरान शरीफ किसके लिए हिदायत है? सबसे पहले किसके लिए हिदायत है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब. उसके बाद कहा गया वयुकीमून अस्सलात. नमाज से पहले ईमान बिल गैब यानी गैब पर ईमान रखने वालों के लिए कहा गया है कि इनके लिए कुरान शरीफ हिदायत का सामान मुहैया करेगा. So the first thing which Allah mentions, even before iqamatu salah, even before ita'u zakah, even before sawm, even before hajj, even before a'mal, is aqidah, iman.
So we need to rectify our aqidah, reform our aqidah, make it strong inshallah. खुलासा ये कि जिस शख्स का ईमान व अक़ीदा दुरुस्त ना हो या वो गैर इस्लामी ख्यालात व अक़ाइद रखता हो, उससे कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए, अगरचे वो अच्छा बयान करता हो। वैसे आप तोते को भी सिखाएंगे ना तो तोता भी कुरान पढ़ता है और वो भी कुरान और हदीस शरीफ की बात अगर आपको सिखाएंगे वो भी कहेगा, तो क्या हम करेंगे बड़ा आलिम है ये तोता। और ये किराम की अल्हम्दुलिल्लाह तोते समझते हैं भारत हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का तोता था भारत, वो हाफिज कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह, वो तोता हमारा सर का ताज है। ऐसे तोते नहीं, यस, टूटे तोते, yes, we don't believe in such parrots, yeah, who just learn surah number this and verse number this like parrots and then repeat it like parrots। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा देखा जाता है, तो किसी से मुतासिर ना हो। और दूसरी बात ये कि उमूमन ये देखा गया कि घरों के अंदर चूंकि टीवी चैनलें बहुत लग गई है और हर शख्स ने अपना चैनल खोल दिया है, तो हम भी घर में जाके क्या करते हैं, इधर देखते हैं, फिर सोचे चलो 15 मिनट के बाद इस चैनल, let's flick to this channel, let's flick to this channel, और फिर गुमराह लोगों की तकरीरें सुनते हैं और उनसे मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी खबासत को फैलाने के लिए, तो फिर भी हम उनकी महफिलों में जाते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से बचाए। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, ये हदीस शरीफ में है, आप उनसे बचो और उनको अपने करीब ना आने दो, उनको अपने करीब ना आने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुमराह हो जाओ या वो तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। ओके, beware of them। कुरान करीम में गैर इस्लामी अक़ाइद रखने वालों की नेकियों और उनके कारनामों को बेकार और फजूल फरमाया गया है, और उसकी मिसाल उस गुबार से दी गई है जो किसी चट्टान पर लग जाती है फिर उसे बारिश धोकर बहा देती है। कमथल सफ़वान अलैहि तुराब फ़असाब वाबिल फ़तरकू सल्दा। यस, as we mentioned before, किसी चट्टान पर गुबार लगी हुई है, फिर मूसलाधार बारिश नाज़िल हुई और सारा गुबार बहा दिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ आखिर में कुछ भी नहीं, सिर्फ चट्टान बाकी है, कुछ भी नहीं उसके ऊपर। इसी तरीके से जो लोग ईमान और अक़ीदे की हिफाज़त नहीं करते हैं और उसको दुरुस्त रखने की सोचते नहीं, फिक्र नहीं करते हैं, उनके अमाल का भी यही हश्र होगा। अल्लाह ताला हम सब के अमाल की हिफाज़त फरमाए और सबसे पहले हमें अपने अक़ीदे को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। Now coming on to a different aspect here, another aspect, I think before I move on to this, I just remembered one thing here because I saw this piece of paper on the floor, so I'm going to mention something about this. यानी कभी-कभी हम ये चलते फिरते रास्ते में या मस्जिद के अंदर ऐसे कागज़ जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, उर्दू में या इंग्लिश में भी या अरबी में, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, अरबी हुरूफ हो या उर्दू के हुरूफ हो या इंग्लिश में भी कुछ इस्लामी बात लिखी हुई, तो हम बेतवज्जुही से बेहतियाती से उसको वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें अदब की है उसको अदब की जगह और एहतियात की जगह पर रखनी चाहिए। जैसे कि ये इस कागज़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और इस्लाम के मुतालिक है, तो उसको उठाकर किसी अच्छी एहतियात की जगह पर रख देना चाहिए। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और उमूमन आजकल जो है वो मेन्यू यानी फूड मेन्यू, talking about food, you've still got mashallah hours left inshallah, so don't worry। तो टेक अवे मेन्यूज के ऊपर हर कोने के ऊपर क्या लिखा हुआ था, हलाल हलाल हलाल, या हलाल 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 हलाल। I think what they should do is separate a complete page and just put halal 100 times on it। They have to do this, unfortunately. Why do they have to do this? Possibly because we don't trust them. We don't. This has become such a. We're living in such a day and age that we cannot even trust a Muslim. That the chicken that he's slaughtered, or that he is saying that this chicken tikka is halal, we can't even trust that. Why? Because we have reports in the news and elsewhere that Muslim poultry farms have been fined because they were exporting meat sealed as halal, and when they investigated, it was completely haram. They weren't reciting Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. They were doing mechanical slaughter. They were electrocuting literally the chicken. They were dying before they could say Bismillah, Allahu Akbar. Or they were saying Bismillah, Allahu Akbar 1,000 times and the chicken came, so they slaughtered it. Or they played the tape, cassette player,
the CD goes round and round saying Bismillah, the other guy saying, the CD is saying Bismillah, but this guy just will like this and that, it's like a robot. In this manner, this chicken won't be halal, the meat won't be halal. Okay, we've seen on the news. So that's why obviously they then say our meat, the meat that we provide is halal. But obviously if they say it's halal, then the onus is on them, the responsibility is theirs. On Yawm al-Qiyamah, Allah will hold them accountable for that. Obviously on our part, we should do as much research as we can and avoid things which have a doubt in it. دَعْمَا يَرِيبُكْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكْ. Strike out what gives you doubt. Okay? Nonetheless, what was it saying? Yes, halal. So these logos are printed on these menus, on these leaflets. Even in wedding invites we have, mashallah, wedding invite, and it's a long verse of the Quran, from Surah An-Nisa, written in English translation, maybe even a hadith of the Prophet ﷺ. I advise people not to print such things on even posters. Don't put the name Bismillahir Rahmanir Rahim in Arabic. Keep it simple. If you need to, just put the numerical value 78692, which denotes Muhammad. Okay, Arabic calligraphy and any hadith of the Prophet ﷺ in which you know that people are susceptible, people are going to throw this in a place which is inappropriate, not going to dispose of it in a respectable manner, then don't print such things on your wedding invites, on any invites that you print. Keep it simple. Okay? And if you see any item, any leaflet, any letter, any leaflet, any menu which has any wording of Arabic, if you cannot take the entire leaflet, just rip the part which has the logo halal printed on it, or any Arabic wording on it, or Ramadan, for example, written on it. The more respect you show, the more Allah will shower you with blessings. Everything revolves around blessings. Har cheez ka madar adab ke upar, and you know this incident so many times about Sayyidina Bishr al-Hafi radiallahu ta'ala, when he found a piece of paper on which was written Bismillahir Rahmanir Rahim, which was trodden by people. People walked over it. It was put in a very disrespectful place, in a very inappropriate place. And he was not a Sufi, an alim, a sheikh at that time. He just happened to have picked that piece of paper out of adab and respect that he had for the words Bismillahir Rahmanir Rahim. He kissed it, and then with the money which he had in his pocket, he went to the attar, to a fragrance seller's shop, perfume seller's shop, and he purchased a bit of perfume, applied it to that piece of paper, and placed it on the highest shelf that he had in his house. That night he saw a dream which was the opening of his spirituality, and then Allah subhanahu wa ta'ala made him one of the greatest awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, who throughout his entire life never wore sandals, never wore footgear. He always walked barefooted. And out of respect of Bishr al-Hafi, the animals that would walk on the path, they would not defecate, they would not excrete or do anything on the path, because they knew that Bishr al-Hafi is going to walk on this path. An old lady once saw that an animal has polluted the path, fouled it. She knew Bishr al-Hafi rahmatullah has passed away. And when she ascertained the report, Bishr al-Hafi rahmatullah passed away. Rahmatullahi rahmatullahi. So nonetheless, adab is very important. With books as well. Now for example, we usually announce in the masjid that we are going to have a burial for the Islamic literature. And Islamic literature does not mean like books like these, for example, that you just take from your shelf. I've not been praying them for years, I'm just going to dump them. No, if you've got books, valuable books in your home, show it to the ulama of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. It might be a benefit to them. Okay? So give it to them. Quran Sharif, people are literally throwing the Quran Sharif away. Quran Sharif की binding एक ऊपर से एक हिस्सा शहीद कर दिया, यानी अलग हो गया है, तो फिर भी हम उससे पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं कि फिर हम उसको फिर वो दफन करने में डाल दें. नाउज़ुबिल्लाह. उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, उसका अदब करना चाहिए. हाँ, अगर ऐसा हो चुका है, मुसहफ शरीफ ऐसा हो चुका है कि अब पढ़ने के लायक नहीं रहा, उसके अंदर से सफ़ात निकल रहे हैं, तो फिर आप उसको अच्छे जुज़दार में खुशबू लगाकर अदब के साथ उसको रखें. जब ऐलान किया जाए दफन के बाद, तो उसको फिर भी अदब के साथ नीचे उतारा जाए ज़मीन के अंदर. और ये ख्याल है कि उसके ऊपर डायरेक्ट मिट्टी न डाली जाए, बल्कि एक जो है
लकड़ी का जो है वो तख्ता उसके ऊपर बिछा दिया जाए, उसके और कुरान शरीफ और जुज़दान के दरमियान कुछ हिस्सा हो और मिट्टी तख्ते के ऊपर रख दिए जाए, न कि डायरेक्ट कुरान शरीफ मुसहफ शरीफ के ऊपर. So I've seen it with my own eyes when we went to the burial of the Islamic literature and people were just throwing books, Quran Sharifs, they're nice, intact mushafs of the Quran Sharif that they could have given as a waqf to the masjids and so forth. Obviously with translation you have to be very careful about tafsirs. They have to be on orthodox Ahlul Sunnah wal Jama'ah tafsir and so forth. So this is what I wanted to mention. So just want to finish at this point. The conclusion is have adab and respect, and if you are, for example, publishing or printing any leaflets and so forth, make sure and ensure that you do not have much verses of the Quran or any ahadith, and if you do, then you make sure that you put somewhere at the bottom NB that please ensure that because this letter or this leaflet or this book contains verses of the Quran or ahadith of the Prophet, make sure that you dispose of it in a respectable manner, and inshallah you should be free of the obligation of showing respect to such verses. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq to have adab, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us beneficial knowledge and grant us the tawfiq to act upon them. Ameen inshallah. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad ma'adani judi wal karami wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا إلا وفقته ولا عسرا إلا يسرته ولا مشتاقا لزيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلغته ورزقته. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عادل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.